Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. Hello everyone, today we are going to start with our next topic, that is classification of activities. So there are two types of activities which are mainly described as economic activity and non-economic activity. Economic activity is further divided into business, profession and employment. And we have to see the differences between all the three, that is business, profession and employment. With the help of PPT, I will be going to discuss all the three particular major subheads of economic activity, that is business, profession and employment. Let's see further. So let's move further on the types of activities. There are basically two types of human activities which can be classified. These are economic activities and non-economic activities. Okay, so let's first see what are economic activities. Economic activities are those kind of activities which are undertaken by people with the object of earning money are known as इकोनॉमी. यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वो एक्टिविटीज जिसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट से संबंध है या पैसे से संबंध है या मॉनेटरी वैल्यू से संबंध है. सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. दिस आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर. इट कैन बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री, practicing as a doctor, lawyer, working as a teacher in a school, etc., etc. See, in this particular example we have seen business से point of view से भी कुछ example देखे हमने, इसमें profession से point of view से भी हमने देखे, इसमें employment के point of view से भी हमने कुछ examples देखे. Now let's see, there are certain differences. Differences को देखने से पहले हम पहले देखते हैं कि business, profession और employment तीनों होते क्या है. ठीक है. Business refers to those economic activities which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. As I have already discussed what business is and what are its characteristics. Then let's come on to profession. Profession refers to the activities which require special knowledge, skill to be applied by an individual in his work to earn a living. These activities are like subject to guidelines, or we can say there are certain code of conducts which have been laid down by the professional bodies. See, the people who are engaged in professions are also known as professionals. हम बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर है तो ये प्रोफेशनल है, या फिर ये लॉयर है तो ये प्रोफेशनल है. ठीक है. देन फॉर एग्जांपल लॉयर्स, डॉक्टर्स, सीए. ठीक है. इस तरीके से हम प्रोफेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. लेट्स कम ऑन टू एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच an individual works regularly for another person. मतलब there is an employee and there is an employer. Employer is the one who is giving work to employee. Those who are employed by others are known as employees, and the person who engage others to work regularly for them are known as employers. ये मैंने अभी आपको बताया कि employer क्या होता है और employee क्या होता है. The remuneration is also been paid. It is also called as salary or wage. एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो एग्जाम्पल्स में वी कैन टेक वर्किंग इन ऑफिसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शॉप्स, एज अ मैनेजर, क्लर्क, प्यून, सेल्समैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now let's come on to the differences. The first difference of basis is commencement. The first is commencement. In business में commence with the decision of entrepreneur. मतलब एक एंटरप्रेन्योर में एक आइडिया आएगा, उसके थ्रू वो बिजनेस को डेवलप करेगा, कमेंस करेगा. प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो उसने मेडिकल की पढ़ाई करी, उसने एमबीबीएस किया, उसके बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसके बाद उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के मतलब अब वो अपनी पर्टिकुलर क्लिनिक को ओपन कर सकता है. Next is employment. Employment commences on joining duty by entering into a service agreement. There are certain terms and conditions, there are certain code of conduct under employment जिसको हम बोलते हैं सर्विस एग्रीमेंट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. Next is qualification. There is no minimum qualification required for commencing business or before starting a business. In profession, there is certain prescribed and professional qualification and training which has been required. In employment, qualification depends on the nature of job. अगर टीचर की जॉब है तो उसको बीएड करना जरूरी है. अगर एक पर्टिकुलर प्यून की जॉब है, एक क्लर्क की जॉब है तो उसको बैंक की पर्टिकुलर डिटेल्स आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बैंक में कौन कौन सी चीजें होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस. उसका ऑपरेशन कितना बड़ा है, उसका डिग्री ऑफ ऑपरेशन क्या है.
ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन में देयर इज लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज रिस्क. इन बिजनेस वी ऑलवेज नो देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. रिस्क वाला जो पार्ट है हम इसका एक अलग से सेशन लेंगे विच विल बी टर्म्ड एज बिजनेस रिस्क एंड इट्स एलिमेंट्स. हमने बिजनेस रिस्क के बारे में समझा है कि बिजनेस रिस्क के बगैर हो नहीं सकता. ठीक है. So in profession there is little risk present and in employment there is no risk involved. Next is transfer of interest. With some legal formalities business का जो interest है वो transfer हो सकता है. In profession it is not possible because a person is specified. अब एक पर्सन जो है वो स्पेशलाइज्ड है उसकी ट्रेनिंग में. अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर कोई और नहीं बन सकता. अगर एक लॉयर है तो लॉयर ही करेगा. क्यों? क्योंकि उसने लॉ की पढ़ाई करी है. एक नॉर्मल इंसान लॉयर बनना है तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से गुजरना पड़ेगा, उसको प्रॉपर लॉ की पढ़ाई करना पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, इन एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. इन बिजनेस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. The main objective of profession is to provide services. As we always say, डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइड करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि वो डॉक्टर बने ही इसलिए है. And in employment, the main objective of employee is to earn income, which can be also be called as in the form of salary or wages by satisfying the employer. Okay. Next basis of difference is code of conduct. In business there is no code of conduct prescribed. ठीक है. In profession there is code of conduct. Yes. What we can say is we can take an example of doctor. They have to wear white apron. ठीक है. Then उसके बाद अगर हम lawyers की बात करें they have to wear black coat. ठीक है. So there is a proper code of conduct which has been prescribed by whom? Which has been prescribed by professional associations. Employment की बात करें तो there are certain terms and conditions of service contract which are applicable on all the employees which are working under any institution. Next basis, nature of work. In business it involves production, the activities of production, purchasing, selling or exchange of goods and services in return of money or profit. In profession it involves rendering of personalized services of specialized nature. In employment it involves performing the work as assigned by the employer. ठीक है. मतलब उसके एम्प्लॉयर ने जो उसके लिए वर्क असाइन किया है वही उसका नेचर ऑफ वर्क होगा. लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज रिवॉर्ड. This is one of the major important point. In business, the reward for business is called as profit. In profession, the reward for profession will be called as fees. In employment, the reward for employment will be called as salary. So hence, today we have discussed in this particular session what are economic activities.